All right, so today we are going to talk about 5 easy ways to lose your money while investing. And I guess this is a really, really pertinent topic given the overall conditions in the world right now. I mean, So couple of rule of thumb. So one very easy way to lose money is to not understand what you're doing. So you can be speculating, you can be trading, you can be doing whatever you want. Any field that you, anything you're purchasing or buying that when you don't understand product, when you don't understand like basics of it, then the chances of losing money is high. Just like for example, if you're buying a car, you are not sure about what you want and which model is in, which model is out, you chances are that you might end up doing a wrong purchase. Similarly, while investing, if you're not sure as to what your objective is, what your requirements are, and just for the sake of investing, or someone has advised you, or you got a tip from someone, or some chap is behind you to invest, or you're hearing news that market is doing well or bad, and you decide to jump to a decision just because of these factors, chances are high that you might end up losing money. Having said that, this talk or this conversation is primarily related to investors who are having a long-term vision and goals which serve long-term purpose. Like an argument against the discussion that we are having would be that for traders, for example, they keep on doing trading and they keep on, as they say, making money. But that is not the thing that we're talking about today. We're talking about pure investors who are looking for long-term investments. अगर आपकी ट्रेडिंग मेंटालिटी है एंड आपको लगता है कि कोई आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या कोई शेयर में इन्वेस्ट किया और तुरंत उसको प्रॉफिट हो गया एंड आपने कुछ सोच के इन्वेस्ट किया था बट आपको प्रॉफिट शॉर्ट टर्म दिख गया तो आपका अगर ट्रेडिंग मेंटेलिटी हावी होगा तो यू एंड अप selling that particular stock or mutual fund or whatever investment option you have. तो right. अगर इस ऑब्जेक्टिव से आप काम करोगे तो essentially you might end up losing money. कई बार ऐसा भी लोग करते हैं कि किसी के एडवाइस पे काम कर रहे हैं जैसे मैक्सिमम लोगों को जो मैंने देखा हुआ है दे are not aware about financial market, the nitty-gritties of the financial market. So they tend to work on advice of someone. Now this can be their relative, this can be their advisor, this can be the relationship manager, broker, anyone. Especially broker में ये ट्रेडिंग मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा होता है वो उस चीज़ को पुश करते हैं तो अगर आप उस बेसिस पे काम कर रहे हो तो चांसेस ज़्यादा हैं कि you will end up losing money. Right. And why do you think people have that mentality? I would say not understanding. Like for example, अगर मैं क्लासिक केस लूँ, कोई भी इन्वेस्टर आज की डेट में जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में Hmm. पीपल डोंट हैव ट्रेडिंग मेंटालिटी. वो 10 साल 20 साल होल्ड करके करेंगे. उनको अगर 2 साल 3 साल रिटर्न नहीं भी मिलता है तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता. उनको पता रहता है कि Right. लॉन्ग टर्म में कुछ दे के ही जाएगा. मतलब उनकी मेंटालिटी ऐसी रहती है. वो अलग बात है कि दे के जाएगा नहीं दे के जाएगा, ऐसा separate discussion. But as an investor, the approach towards or the attitude towards that particular asset class, in this case real estate, is quite different. Or for example, gold. हमारे यहाँ Hmm. लोग गोल्ड को होल्ड करके रखे रहते हैं लॉकर्स में. Right. तो उनका इस एसेट क्लास में वेदर इट बी गोल्ड और रियल एस्टेट कोई सेलिंग व्यू पॉइंट नहीं होता. वो खरीद के रख लेते हैं. Hmm. Hmm. अगर आप किसी ने रियल एस्टेट खरीदा हुआ है, में फ्लैट खरीदा हुआ है, मान लो 50 लाख का फ्लैट खरीदा हुआ है और Right. अगले 3-4 साल में एरिया बहुत अच्छा हो जाता है, 50 लाख की वजह 70 लाख हो जाती है, स्टिल दे Hmm. नॉट सेल. उनको लगता है कि नहीं नहीं अच्छा बहुत अच्छा एरिया है तो भी शायद 1 करोड़ हो जाए. Right. तो हालांकि अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस टाइम पे बट दे डोंट हैव दैट ट्रेडिंग मेंटालिटी फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास. बट Right. क्योंकि इक्विटी थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस लगता है, ज्यादा इट इज वेरी मच टॉक्ड अबाउट एंड वेरी लिक्विड ऑल्सो. लाइक रियल एस्टेट Hmm. आप बेचने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है, Time लगेगा. वायर खरीदना पड़ेगा, लॉट ऑफ थिंग्स. Yeah. इक्विटी इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स. यू कैन इफ यू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट यू कैन डू इट ऑनलाइन या ब्रोकर को बोल दो वो कर देगा, ओवर द फोन हो जाएगा. तो इस वजह से वो Right. पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग पीपल लिक्विड होने के लिए थोड़ा एक नुकसान भी है कि वो दे टेंड टू जिसमें एग्जांपल दो, अगर मान लो किसी के पास 1 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसको पैसा Hmm. चाहिए तो वो उसका पहला इंस्टिंक्ट होगा कि फिक्स डिपॉजिट तोड़ दो. Right. राइट. It's अगर easier. Yeah. अगर प्रॉपर्टी में मान लो नहीं भी आ रहा है लाइक that particular area is not upcoming, things are not moving positively in terms of appreciation of the property or the locality, still they will hold on to that particular asset class क्योंकि एक उनका माइंड मेकअप हो गया कि रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में अच्छा ही देगा. Right. तो ये एक चैलेंज होता है और ऐसे उनको प्रोजेक्ट भी किया था. लेकिन एडवाइजर्स यही बोलते हैं कि अरे सर आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा था, देखो 150 रुपए हो गया, 120 रुपए हो गया, 20 रुपए का फायदा हो रहा है, बेच के निकलो. तो Hmm. ये जो बेच के निकलने वाला थॉट प्रोसेस होता है ना कि 100 का 120 हो गया बेच दो, फिर 80 में खरीद लेंगे या 100 में खरीद लेंगे. और But is this driven more by the ease with which you can actually transact in that asset class, or is it yes, it is also driven driven by because people have? also there's a factor
जो जेस्टेशन पीरियड है ना एक मूवमेंट का साइक्लिसिटी का एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में, लाइक फॉर एग्जांपल इन रियल एस्टेट द जेस्टेशन पीरियड ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द एसेट क्लास इज वेरी हाई। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हर एक महीने पे रेट फ्लक्चुएट कर रहा है प्रॉपर्टी का। So you will not see those turn of events in front of your eyes spanning that frequently in a gold or a asset class such as real estate. लेकिन शेयर में क्या होता है, इक्विटी में स्पेसिफिकली आपको तुरंत दिखता है, अरे आज मार्केट क्या चल रहा है, 8,000 था अब तो 7,200 हो गया, अरे कल तो 9,000 हो गया। तो वो Price discovery is easier. हाँ, मतलब जस्ट लाइक अ पपेट शॉप सामने चल रहा है, यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, यू आर इन दैट मोमेंट। Right. So, and then what happens when you have that, you develop that mentality either by your own or by some kind of push, then you become a part of the game. Then many times you can't even refrain from doing something. Like ये बोलता है मुझे कुछ करना चाहिए, like you might hear your friends कह रहे मैंने इतने में खरीद दिया, इतने में बेच दिया, तो आप बोला मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं कहीं रहना चाहूँ। All this come into picture, जबकि ये मेंटेलिटी आप दूसरे सेट क्लास में नहीं लगाते हो। I mean, फॉर एग्जाम्पल डेट में भी लोग नहीं लगाते। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जाम्पल, तो वहाँ पर डेट इज हाई ट्रेडेड मार्केट। इंडिया में नहीं उतना ट्रेडेबिलिटी, सॉरी उतना ट्रेडेबल नहीं होता है डेट, लेकिन ट्रेड होता है फिर भी, लेकिन फिर भी वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है डेट में आज के डेट में। I get what you're saying, but like someone who doesn't spend a lot of time specifically looking at their portfolio, how does that person develop trust or go about managing their portfolio themselves, or develop trust in someone else to actually manage their money for them? Because either of these choices are not easy, no matter who or what that situation. Yeah, how does that play out? see, there's no quick fix to this thing. Like we discussed in our earlier podcast also. Like my personal belief is investment should never be done on the basis of trust. It should be done only on the basis of facts. But the problem is most of the people, uh, investors, especially in the category of HNIs or ultra HNIs, they're so engrossed in their own field that they don't have time to put those hours for understanding and analyzing and doing all the dirty work to understand the market and then take a decision. So they tend to rely on some people. तो इसका कोई क्विक फिक्स है नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा और आपको वो टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर थिंग। यस, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हायर एडवाइजर्स फॉर यू, लाइक we keep on saying it is far better to hire a fee only advisor as compared to going to a bank or any other distributor, or there are a few advisors in the guise of fee only advisory जो RIA वगैरह होते हैं जो बोलते हैं कि हम सिर्फ फीस लेके करते हैं, वो करते नहीं एक्चुअली। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फॉर एनी वन ऑफ द की फैक्टर इन हिज एंटायर लाइफ इज मनी। Right. And lot of your goals, wishes, hobbies revolve around money, and it would be very silly for any person to be not, I'm not saying become a like perfect person to understand and take care of your money, but at least have some understanding of what you're doing with your money, what you plan to do with your money, what is the basic understanding। तो आप कमा भी उसी के लिए रहे हो, आप सारी चीजें उसी के लिए कर रहे हो, आपके बच्चों के गोल्स, आपके रिटायरमेंट गोल्स, घूमने के लिए, आपकी लग्जरी के लिए, सारी चीजें मनी के अराउंड ही रिवॉल्व जब हो रही है, तो एटलीस्ट कुछ टाइम डिवोट करना समझने के लिए कि कैसे यूज कर सकते हैं इज नॉट अ बैड डील आई थिंक। तो इसका कोई फिक्स नहीं है। यस, व्हाट यू कैन डू इज लाइक दीस डेज लॉट ऑफ ब्लॉग्स अवेलेबल, देयर इज लॉट ऑफ YouTube channels available. You can go through them. You can do it in your spare time. You can make some notes. You can study if you want to. तो बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, but you have to be aware. There is no other short term trick और कोई तरीका नहीं है जिससे आप उसको बेटर तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपके सामने जो भी आएगा उसका कोई ना कोई एजेंडा रहेगा ही रहेगा। It's always better, like we keep on saying, if you want a bit of more transparent approach, hire a fee only advisor. Pay a fee to him and get those services. That is a better option. Plus, keep asking questions to whatever advisor you have. Keep updating yourself, understanding of basic things. तो उससे बहुत सारी चीजें sort out हो जाती है लाइफ में। मतलब like that's what I can make out of this situation. Otherwise, probably should spend some time talking about the panic, especially in the context that we have today. So, what are your thoughts on panic and managing panic for that matter? The panic is also very subjective. COVID is a recent phenomenon, so everybody is aware of it. But if you look at history of past, however many years Indian stock market has been in place, there have been so many events. Like 2008 is a very pronounced event. Rashad Mehta scam which happened. Satyam scam happened. So all those things, a lot of events were there when markets crashed or went up। इतने सारे स्कैम्स हुए, इतने सारे इवेंट हुए जब बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी मार्केट में। तो टू से दैट एनीवन कैन परफेक्टली प्लान फॉर इट, आई डोंट थिंक सो। बट
होता क्या है, when you have a holistic view of your investments, what you want to achieve financially and how are you placed financially, then things become far more stable for you as an investor. I'll give an example. तो अगर मान लो किसी की इनकम लाख रुपए है और वो खर्च 90,000 करता है महीने का, तो वो हमेशा ही परेशान रहेगा फाइनेंशियली. लाइक I know a Right. lot of people, I know a lot of investors, friends keep on piling up with the credit card bills, keep on investing in depreciating assets, keep on not having a disciplined approach towards investment. तो वो एक उनका inherent quality है उनकी personality में. So this could lead to two things. Either वो बिल्कुल ही परेशान रहेंगे ऐसे सिनेरियो में, और वो बिल्कुल ही चिंता नहीं करेंगे, चलो उनका नेचर ही ऐसा है कि they don't care about it. Right. But for a general public, by and large, for a majority population, financial discipline is what will hold anyone in these kind of scenarios. So consider another example. किसी बंदे ने अच्छे से प्लान किया है और they have taken care of some basic things like asset allocation, doing a proper equity, debt, real estate, commodity diversification in terms of asset. किसी ने अगर debt में भी रखा हुआ है तो कुछ proportion fixed deposit में रखा हुआ है, कुछ proportion short term में रखा हुआ है, emergency corpus बना के रखा हुआ है, let's say 6 महीने का या साल भर का emergency corpus. Now the same situation, the same uncertainty in their life is also as compared to another guy. But at least to some extent they have planned for it, and थोड़ा एक peace of mind इस केस में लोगों को मिल जाएगा. Now the problem is people talk about it, people realize and understand these things when this situation arises. But जाने के बाद या इसके जाने से पहले भी लोग वैसे ही थे और वैसे ही रह जाते हैं. Like I know a lot of people who think कि emergency corpus में तो पैसा कम interest पे रहता है तो उसका क्या मतलब है, right? But that's not the purpose of that money, right? So you are foregoing a certain extra return or a certain interest on that particular amount for that peace of mind which you would require at this kind of situation. Yeah. या कई लोग जैसे It's basically optionality on that money. You're Correct. buying option to Exactly. exercise that something. तो जैसे कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं. यानी मैं तो अभी 33, 32, 30 इयर्स का हूँ, मैं कहाँ कुछ बीमार हूँ. लाइक अब ये जो सिचुएशन है कोविड में एंड द काइंड ऑफ चार्जेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग, इवन द रिचेस्ट ऑफ रिच विल थिंक ट्वाइस गोइंग टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल. तो यहाँ पे आपको ऐसी चीजें काम आती हैं. तो you're paying a certain premium every year, which seems like a waste for a large part of your life. But as and when the situation will come, you will be better equipped to handle it as compared to a lot of other fields. तो इस तरह के फाइनेंशियल जजमेंट होते हैं जो एक इंसान ले सकता है लाइफ में, जब वहां पे मिस हो जाता है तो इस तरह की वॉलेटिलिटी से पैनिक आ जाता है. तो that's why we advocate always that people should stick to basics, people to understand basic finance. Like एसेट एलोकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट, हमने एक पॉडकास्ट किया था एसेट एलोकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. एसेट एलोकेशन इसीलिए है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट योर एसेट यू हैव टू अकाउंट फॉर दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस. आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे दैट्स सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, बट एटलीस्ट यू विल हैव सम पीस ऑफ माइंड एंड यू विल नॉट टेक डिसीजन इन हेस्ट. मतलब मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि इस तरह के पैनिक की सिचुएशन में दे एंड अप इन्वेस्टिंग मोर. Yep. Because there are a few people, like at least in my know-how, we've tried to actually become more aggressive, turn from debt to equity a little bit. But that's a luxury, like very few people can afford. Yeah. Correct, but at least इतना तो हो सकता है कि अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो एटलीस्ट यू कैन हैव योर पीस ऑफ माइंड इन दीस ट्राइंग टाइम्स. तो एक आपके पास फॉर एनी इन्वेस्टर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ साउंड फाइनेंशियल प्लान इज टू गिव यू अ प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स. तो लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि गोल बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए. तो गोल बेस्ड प्लानिंग क्या है? गोल बेस्ड प्लानिंग अगर आप मतलब थ्योरेटिकली कोई पढ़ेगा तो 4-5 पॉइंट्स है, एक 2 पैराग्राफ का आर्टिकल कहीं मिल जाएगा, वही मिलेगा. लेकिन when you understand the crux of it, you understand what is short term planning, what is long term planning, what is emergency planning, and when you execute those things, that's where the financial freedom, the financial empowerment comes to an investor. नहीं तो फिर तो informed investor और किसी भी uninformed investor में फर्क ही क्या रह जाएगा? That's the basic of it. I think we went into quite a lot of details. I think the fifth point, which is like not sticking to basics, more or less gets covered into whatever we said. So I guess the TLDR is that investors should keep their eyes open, watch dreadfully where they're going, and if possible, just stick to as much basics as possible, and don't let their psychology of acting in like really critical situations take over their mind and do something rash, take them over and do something stupid.
So with that, we come to an end of another education session. We'll continue with this going forward. We hope you liked it. If that's true, then please do let us know. Always there to listen to you. Thank you so much. See you.